दिया था वो निकाल लीजिए and just go through the question which says write short notes on CA code, P code and navigation message. Just go through it once, take 5 minutes, go through it once, and then we see it on the screen also. Prince, when you take it out, please tell me. Yes, sir. Okay, can you read the question, what it says? Write short notes on CA code, P code, navigation message. Okay. Just for familiarizing ourselves, please read the answer to the first part, that is CA code. What we have to write? CA code. CA code is modulated over L1 carrier frequency by phase modulation. It is transmitted at the rate of 1.023 Mbps in the form of 0 and 1 called a chip. Length of a chip is 1 microsecond and terms of length measures 293 meters. 1023 chips make a complete CA code. Thus, a complete CA code is of 1 millisecond and terms of length measures about 1023 multiply 293 300 kilometer. Each satellite has its own unique CA code. The GPS receiver looks to this CA code, synchronizes itself with code, and then uses it for timing and ranging purposes. Okay, so did we understand? There is carrier frequency L1, L2. Carrier frequency brings the information. It is only carrier. 1575.42, 1227.56 is not the information. इंफॉर्मेशन आती है, ये घोड़ा है जिसके ऊपर बैठ करके और मैसेंजर आएगा. जैसे 98.3 हम एफएम सुनते हैं, तो 98.3 मेगाहर्ट्ज में कुछ नहीं, वो लेके आ रहा है. क्या लेके आ रहा है? गाने, न्यूज, टीवी में पिक्चर, डीएससी में मैसेज. कैरियर फ्रीक्वेंसीज ओनली ब्रिंग द इंफॉर्मेशन. कैरियर पे इंफॉर्मेशन डालते हैं. कैरियर पे इंफॉर्मेशन डालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Modulation. Modulation. There are various types of modulation methods, AM, FM, PM, etc. etc. यहाँ पे कौन सा मॉड्यूलेशन का मेथड यूज करते हैं हम लोग? Phase modulation. फेज मॉड्यूलेशन. तो जस्ट नाम जान लीजिए, वो फेज मॉड्यूलेशन इज एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, हम उसमें नहीं जाएंगे, बट जस्ट नाम कम से कम जान लें और ये जान ले कि चीज क्या है. तो phase modulation is a method of superimposing the 0 and 1 onto the carrier frequency. 0 and 1 से कोड बनता है, रिमेंबर, वो डिजिटल इंफॉर्मेशन है. That information is superimposed on L1 frequency by phase modulation. Then we are saying that it is binary code 0 and 1. This 0 and 1 is called chip. चिप का लेंथ होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम. मान लीजिए 1 सेकंड में, फॉर एग्जांपल इफ आई से डॉट 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 डॉट, 1 सेकंड में 4 बार मैंने डॉट डॉट बोला,
तो एक डॉट बोलने में कितना टाइम लगा? 0.25. 0.2 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं? 1.023 मेगा। मेगा मीन्स 10⁶। तो एक के लिए 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय मेगा, दैट इज माइक्रोसेकंड। 10⁶ को से डिवाइड करेंगे अगर 1 को, तो इट इज 10⁻⁻⁶ बेसिकली, विच इज माइक्रोसेकंड। सो वन चिप एक 0 या एक 1 ट्रांसमिट करने में हमें टाइम लगता है 1 माइक्रोसेकंड। मैंने डॉट 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 बोला 1 सेकंड में 4 बार। तो मैंने पहला डॉट बोला, डॉट 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 डॉट। चौथा बोल रहा हूं तो ये आगे चला गया कि नहीं? आप सुनते हैं पहली वाली डॉट पहले सुनते हैं, लास्ट वाली लास्ट में सुनेंगे। दैट मीन्स इट इज ट्रैवलिंग थ्रू द एयर मीडियम at Yes, sir. certain speed, at certain speed it is moving। तो डॉपलर लॉग में हमने देखा था कि थ्रू द वाटर इट इज ट्रैवलिंग एट 1500 मीटर पर सेकेंड, इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैंने 4 बार डॉट डॉट बोला, डॉट 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 1 सेकेंड, तो पहली डॉट कितनी दूर चली गई जब मैं यहाँ लास्ट वाला खत्म कर रहा हूँ? 1 सेकेंड का डिस्टेंस स्पीड के बेसिस पे। साउंड वेव का स्पीड क्या है एयर में? एनीबॉडी रिमेंबर्स? यस, व्हाट इज द साउंड स्पीड इन एयर? सब भूल गए। 330 मीटर पर सेकेंड। So the first dot has traveled 330 meters when I am finishing the fourth one। जब मैं फोर्थ खत्म कर रहा हूं तो पहला वाला 330 मीटर आगे चला गया। तो 4 डॉट हैं 330 मीटर में, यहाँ खत्म हो रहा है, वहां पहुंच चुका। तो एक का डिस्टेंस कितना होगा? एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। हाँ सर, अभी एक पापा की दवाई लेने जाना है तो मैं क्लास ऑफ कर रहा था, तो मैं जा रहा था, तो इसे बताया मैंने बीच में कि मैं अभी ओके, सो ये यू आर क्लास। लीविंग द क्लास नाउ? यस सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है, ऑलराइट। All right, so what we said, there are 4 dots in 330 meters, क्योंकि पहला 330 मीटर गया जब हम खत्म कर रहे हैं फोर्थ वन। तो there are 4 dots in this 330 meters। तो एक डॉट का कितना टाइम हो गया? कितना डिस्टेंस हो गया दिव्यांश? Yes, sir. Answer my question। Sir, 1 divided by 330. नहीं, 330 डिवाइडेड बाय 4। 4 डॉट है 330 मीटर में ना। पहला डॉट, हाँ सर। दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट। 4 डॉट हो गए तो 330 मीटर हो गया ना। Yes, sir. तो एक डॉट का टाइम कितना होगा, मतलब डिस्टेंस कितना होगा? 330 divided by 4. 4। तो ऐसे ही यहाँ स्पीड ऑफ लाइट से चलती है 3 × 10⁸ मीटर्स 1 सेकंड में चलता है। और उसमें कितने बिट्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं? 1 मेगाबिट्स, 1.023 मेगाबिट्स, है ना? So speed of Yes, light sir. divided by number of bits transmitted in that, so that works out to be how much? 300. 293. 293 meters जो हमने नोट किया है। Exactly. So now you understand। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिट्स मिला करके एक कोड बनता है। How many bits are required to make a code? 010100। How many?
1023. 1023, वेरी गुड. सो पूरे कोड का लेंथ होगा, क्योंकि 1 माइक्रोसेकंड 1 माइक्रोसेकंड 1 1 1 1 इतने सारे बिट्स हैं, ईच वन 1 माइक्रोसेकंड. 1000 बिट्स हैं, हर बिट 1 माइक्रोसेकंड का, तो 1000 into माइक्रोसेकंड्स, दैट इज 1 मिलीसेकंड. एक कोड 1 मिलीसेकंड का होगा, which converted to distance will give you 299753 or something meters, approximately 300 kilometers. So this is what we write. हमें बेसिकली इतना समझने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन what you are writing अगर उसके बारे में समझ में आती है तो comfortable होता है. That is why I am trying to explain. Otherwise you can just copy it down कि ये सारा information है. Now going to the P code on the similar lines. अपने नोट्स को देखते रहिए आप लोग. P कोड को जो आंसर है उसके नोट्स को देखते रहिए, शॉर्ट नोट्स. P code is transmitted on L1 and L2 both. ये दोनों पे होता है, हम डेटा में देख चुके हैं. P code is transmitted on L1 as well as L2, both the frequencies, again by phase modulation. It is also binary code in 0 and 1, but transmitted at the rate of 10.23, not 1.023, but 10.23, 10 times faster speed. Number of bits in 1 second is increasing, so the time taken is less, 1 by 10th. So that one was 1 microsecond, one chip. This will become 1/10 of a microsecond, that is 0.1 microsecond. Similarly, 1 microsecond में distance traveled was 293 meters. Now this distance also will become 1/10, so 29.3 meters. So in the P code, transmission rate is faster, 10 times. The chip length is 1/10, that is 0.1 microsecond. And in terms of distance, it is 29.3 meters. यहाँ तक तो comparison होगा. But the next step is entirely different in a way. The code length, P code length, is not milliseconds or something. It is 267 days. एक बार शुरू होता है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता. वो गिब्रेश कुछ चलता रहता है. Not repeating at all. So the P code length is 267 days. Every second, 10.23 bits are being transmitted. That is the rate of transmission. And this rate will continue for 267 days. So you can imagine how much of data will be there. Too much of volume. So what is done? Only 7 days piece of code is uploaded to the satellite. 7 दिन का कोड अपलोड कर देते हैं. वो 7 दिन का कोड ट्रांसमिट करता रहता है. जब वो खत्म होने वाली होती है तो 7 दिन का फिर से दे देते हैं. कौन देगा ये? कौन अपलोड करेगा? गौतम सर, कौन अपलोड करेगा? ये 7 दिन का कोड सैटेलाइट को कौन भेजेगा? मास्टर सर. वेरी गुड. मास्टर नहीं, मास्टर कंट्रोल स्टेशन. मास्टर कंट्रोल स्टेशन. मास्टर तो आपके जहाज में, मास्टर कंट्रोल स्टेशन जो कोलोराडो में, वो भेजेगा. कैसे भेजेगा? कैसे भेजेगा? Through ground station. Through ground stations. On what frequencies?
L1, L2. नो, L1 L2 तो नीचे आता है, नीचे से जो ऊपर जाता है वो तो एस बैंड था ना, रिमेंबर ग्राउंड एंटेनास में एस बैंड फ्रीक्वेंसीज आर यूज्ड टू अपलोड द डेटा, पढ़ोगे तो याद आएगा. So on S band frequencies, this is what is done by the MCS, Master Control Station. यही सारी चीजें करता है, कौन क्या ट्रांसमिट करेगा कैसे. Okay, so Master Control Station is sending 7-day segment of the code to the satellites. Once they are finishing, तब तक दूसरा 7 days का कोड ट्रांसमिट कर देता. Now what is happening? होता क्या है कि जो कोड ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीवर को सिंक्रोनाइज करना होता है सेम कोड से. जो कोड यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है उसी कोड पे सिंक्रोनाइज करना होता है. कुछ होती है, आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अभी समझ में. सिंक्रोनाइज करना होता है मतलब जो कोड चल रही है वही कोड रिसीवर भी जनरेट करता है. अभी समझ लो इस चीज को. तो कैसे पता चलेगा रिसीवर को कि अभी कौन सा कोड चल रहा है? मैं आपके सामने आके पूछ दूं आपको कि व्हाट इज माय एज, आप क्या बोलेंगे? मुझको क्या मालूम भाई, कैसे इधर उधर ढूंढेंगे, किसी से पूछेंगे. बट इफ आई टेल यू दैट आई वाज बोर्न इन 1970, कैन यू नाउ फाइंड आउट माय एज? Yes, sir. सो द कोड इज रनिंग. कब शुरू हुआ था? अभी हमने जीपीएस रिसीवर ऑन किया. मुझको पता करना है कि कहाँ की कोड चल रही है, कौन से दिन की कोड चल रही है. हो सकता है वो 100वें दिन हो, 110वें दिन हो, 115वें दिन हो, कोई भी कोड चल रहा होगा, किसी भी पार्ट ऑफ द कोड चल रहा होगा. सो व्हाट इज डन, द स्टार्ट टाइम ऑफ द कोड इज ट्रांसमिटेड एवरी 6 सेकेंड्स. यहाँ पे हर 6 सेकंड में बताता रहता है कि कोड स्टार्ट हुआ था. जैसे मैंने बताया कि मैं हर बार बताता चलूं आपको कि आई वाज बोर्न इन 1970. तो हर क्लास जो आती है मैं बता देता हूँ कि आई वाज बोर्न इन 1970. हर क्लास को पता चल जाता है कि अच्छा, पिछले साल सब लोग को पता था आई वाज 49, आज आपको पता है आई एम 50. अगले साल पता होगा कि नाउ सर इज 51. सो द स्टार्ट टाइम ऑफ द कोड इज ट्रांसमिटेड एवरी 6 सेकेंड्स, ताकि रिसीवर को पता चल जाए कि अभी कौन सा कोड चल रहा है, और उसके बाद वो सिंक्रोनाइज करने में आसानी होगी. So this is what is done. Number 1, 7 days piece of code is uploaded, and every 6 seconds start commencement of the code is transmitted so that receiver can synchronize it at a faster pace. जल्दी से सिंक्रोनाइज करके और अपना पोजीशन फिक्सिंग शुरू कर दे. एक लास्ट पॉइंट है इसके बारे में, दैट P कोड इज कॉमन फॉर ऑल सैटेलाइट. सारे सैटेलाइट्स एक ही कोड ट्रांसमिट करते हैं, उनका अलग अलग नहीं होता. जबकि CA कोड क्या था? हर सैटेलाइट का अलग कोड था. इसका CA कोड अलग, उसका अलग, उसका अलग, उसका अलग, सबका स्ट्रक्चर अलग था. बट P कोड सारे सैटेलाइट्स एक ही तरीके का ट्रांसमिट करते. So this is about P code. Now can you read, Chevron, आप भी बताओ, can you read the second part of the question? Write short notes on P code. धीरे धीरे पढ़ना, सब लोग सुनिए. P code is modulated over L1 and also L2 carrier frequency by phase modulation. It is transmitted at a faster rate of 10.23 millibar per second Mbps in the form of 0 and 1, also called a chip. Length of a chip is 0.1 microsecond and the terms of length measure to 29.3 meters. A complete P code is of 267 days and is of
2.35 into 1014 bits in length. माइक्रोफोन थोड़ा नजदीक करो, कुछ हिल गया लगता है. A complete P code is of 267 days and is of 2.35 into 1014 bits in length. The code length being अब इसको कैंसिल कर देना, इसको लिखने की जरूरत नहीं. okay, sir. The code length being so large, each satellite is assigned only a weekly segment of the master P code. In order to facilitate GPS receivers to synchronize faster with this long code, the start time of the code is transmitted every 6 seconds. This helps the GPS RX to identify which part of the is being transmitted currently. However, P code is same for all the satellites as against the CA codes, which are unique for each satellite. Understood? Clear? थोड़ा clear? Yes. Okay. So this is what it is, the CA code and P code. These are pseudo-random codes. Remember that these are used for ranging purpose. Range निकालते हैं. अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि how the range is calculated. But before that, there was one more data being transmitted by the satellite. CA code, P code और कुछ और ट्रांसमिट होता था. वो क्या था? Navigation message. Navigation message. So now next is navigation message. Also you have to write short notes on navigation message. तो in general ये समझिए कि navigation message से सैटेलाइट का लोकेशन पता चलता है. जीपीएस रिसीवर को दो इनपुट चाहिए था, सैटेलाइट का लोकेशन, रेंज निकालेंगे सूडो रैंडम कोड से, लोकेशन पता करेंगे उसके नेविगेशन मैसेज. तो शॉर्ट में बात करते हैं. अगेन इट इज ऑल्सो डिजिटल डेटा, 0 and 1 में ही, बट दिस इज अ वेरी स्लो रेट ट्रांसमिशन. बहुत स्लोली ट्रांसमिट होता है. वो तो कहाँ मेगाबिट्स हो रहा था, 10 मेगाबिट्स हो रहा था. इट इज ओनली 50 bps, ओनली 50 बिट्स पर सेकेंड. रेट तो ये हो गया, but it is transmitted in the form of a frame of 30 seconds. आपकी क्लास है, हर क्लास कितने देर का होता है? आपके क्लासरूम में कितने देर का क्लास होता है? 1 hour सर. 1 hour. तो 1 hour का फ्रेम बनाया हुआ है और 1 hour के फ्रेम में एट ए गिवन स्पीड मैं आपको पढ़ाता हूं, इतने सारे लेक्चर दे लेता हूं. वैसे ही नेविगेशन मैसेज इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी सेकेंड्स? 30 seconds. And in this the transmission rate is 50 bits per second. हर सेकंड में कितने बिट्स? 50 50 50 50 50 50 50 फॉर 30 seconds. तो एक फ्रेम में कितने बिट्स ट्रांसमिट हो गए? यस, नहीं समझ में आया? बोर्ड पे चलते हैं. All right, visible board? Yes sir. Navigation message. Navigation message is transmitted at the rate of 50 bps. Every second 50 bits. And it is transmitted in the frame of 30 seconds.
तो 1 सेकंड 2 सेकंड करते करते 30 सेकंड। हर 1 सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं? यस, बोलते चलो साथ साथ में। 1/50. Every second there is 50 bits transmitted. At the rate of 50 bits, यहां से यहां 1 सेकंड है, 1 सेकंड। तो इसमें 50 बिट्स ट्रांसमिट हुए कि नहीं? 50 बिट्स इन 1 सेकंड। Yes. sir. Yes, अगला sir. सेकंड, दूसरा सेकंड, ये पहला सेकंड हुआ है, दूसरा सेकंड, इसमें फिर 50 होगा कि नहीं? Yes, sir. फिर तीसरा सेकंड, 1 सेकंड, इसमें फिर 50 होगा कि नहीं? एवरी सेकंड 50 बिट्स आर ट्रांसमिटेड, राइट? तो करते करते लास्ट वाले 30 सेकंड्स में जब जाएंगे, 30th सेकंड होगा तो उसमें भी 50 होगा। सो यहाँ 1 2 सेकंड, थर्ड, करते करते जब 30 सेकंड्स में जाएंगे तो एवरी सेकंड वाज 50। सो टोटल कितने हो गए? 1500. 1500. 1500 sir. 1500 bits in one frame. In one frame there are 1500 bits. ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। So this navigation message transmitted at the rate of 50 bps, as we said already, in the form of a frame of 30 seconds. एक ब्लॉक में ट्रांसमिट होता है, 30 सेकंड का ब्लॉक, हर सेकंड में 50, which is equivalent to 1500 bits. Now this one frame is further divided in 5 parts called subframe. So there is first subframe, second, third, fourth and fifth. There are 5 subframes. एक फ्रेम तो हो गया, ये यहां से यहां तक कितना हो गया? 30 seconds. But each one is divided in 5 parts, each frame. That means normally, as you would understand, कि इसको मैं छोटा में लिखता हूं, सब फ्रेम को एस फ्रेम ऐसा लिख देता हूं। सो 30 सेकंड को 5 भाग में डिवाइड किया तो दिस इज 6 सेकंड्स। 30 सेकंड में 1500 बिट्स, सो 6 सेकंड में दिस विल बी 300 बिट्स। सही है या नहीं? यस। Yes, sir. Thank you. क्लियर है या नहीं? One frame is 30 seconds. 30 seconds is divided in 5 parts. तो 30/5 is 6 seconds. Correct? एक सब frame will be 6 seconds only. So this 6, 6, 6 and 6. 30 Yes. seconds में there were 1500 bits, all divided by 5. So 300, 300, 300, 300 होगा या नहीं? Total Yes, sir. 1500 bits and total 30 seconds. ठीक है? Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Agree. Yes sir. So then this 300 bits are divided in 10 parts. That means this 300 bits is actually converted into 10 words. So that means this will be 30, 30, 30, 30 करते हुए 10 into 30 is 300 bits. Each one is called a word. 300 bits is 10 words. ये 300 bit 10 parts में divide कर दिया, तो each word is 30 bits. You don't have to write all this.
but just 10 trying to, किसमें डिवाइड किया है? बोलो बोलो 10 what मतलब किसमें डिवाइड किया है? 10 10 words. Ten words. ठीक है. okay. Now the first word of each subframe will start with something called TLM. पहला वर्ड हमेशा TLM से शुरू होता है. दूसरे वाला second one is something called how. दो वर्ड हमेशा फिक्स होता है. इसमें 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 सारे में first word is always TLM. The second word is always how. Hand over word. TLM is telemetry word. How is hand over word. It is always fixed for first two of them. First two words are like this. And the remaining ones are the data which we have talked about, जिससे position वगैरह निकलती है. तो हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ 4 लाइन 5 लाइन लिखना है इसमें आंसर करने में. व्हाट जो शुरुआत हमने करी थी इंट्रोडक्शन में, वो नेविगेशन मैसेज के बारे में, एट ट्रांसमिटेड एट द रेट ऑफ 50 बिट्स पर सेकंड in the form of frame of 30 seconds. This frame is further subdivided into 5 subframes of 6 seconds each. Each subframe starts with TLM word followed by handover word. बस यही लिखना है आपको. इतना सारा 6 सेकंड 30 सेकंड 300 ये सब नहीं करना है. But what you are writing that should be clear to you. अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात. So the first subframe is containing satellite atomic clock corrections. पहले वाले फर्स्ट सबफ्रेम में क्या है? एटॉमिक क्लॉक करेक्शंस, जिससे हम अपनी घड़ी को मैच करते हैं सैटेलाइट के साथ. The second and third subframe is containing something called ephemeris data. Ephemeris data of each individual satellite. What is this ephemeris? It provides the GPS receiver exact location of the satellite when the fix is being taken. जब सैटेलाइट GPS रिसीवर फिक्स ले रहा होता है तो रिमेंबर कि मुझको रेफरेंस स्टेशन का एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए और रेंज चाहिए. तो वो एग्जैक्ट लोकेशन कहां से मिलता है? एफिमेरिस डेटा से मिलता है. What is this ephemeris? It contains orbital information of satellite. ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन मतलब कहाँ चल रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है, किस हाइट पे चल रहा है, किस तरफ को जा रहा है. इस ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन से हमारा रिसीवर उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेता है. मैं एग्जांपल दे रहा था किसी को अभी. मैंने आपको बताया कि मैं 50 किलोमीटर के स्पीड पे चलता हूं.
और मैं चंडीगढ़ की तरफ जा रहा हूं, स्ट्रेट रोड पे जा रहा हूं, सीधे इधर उधर नहीं, तो 1 मिनट बाद कहाँ होऊंगा, 2 मिनट बाद कहाँ होऊंगा, आधे घंटे बाद कहाँ होऊंगा, 1 घंटे बाद कहाँ होऊंगा, आपको पता चल जाएगा या नहीं। यहां से मैंने शुरू किया, वहां जा रहा हूं, उस तरफ को जा रहा हूं, इस स्पीड पे जा रहा हूं, इस रोड पे हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं कि 1 घंटे बाद मैं कहाँ होऊंगा। यस, Yes, sir. Present. so that is what is done by the GPS receiver. GPS रिसीवर को उसका एफएमआरएस मिल रहा है सैटेलाइट का, उस एफएमआरएस में ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन है, उस ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन से जीपीएस रिसीवर सैटेलाइट का एग्जैक्ट लोकेशन पता करता है। The fourth subframe is containing alphanumeric data. ये अल्फान्यूमेरिक डेटा क्या होता है? अल्फान्यूमेरिक मींस ABCD एंड 1 2 3 दोनों को जोड़ करके नंबर्स आर 1 2 3 4, अल्फाबेट इज ABCD, जो दोनों का मिक्सचर है, दैट इज अल्फान्यूमेरिक डेटा। फोर्थ सब फ्रेम इज अल्फान्यूमेरिक डेटा, तो इसमें है क्या? इट इज being used by the GPS service to send a message to you if required. Supposing the GPS service will be down from so and so time to so and so time, और ये आपको बताना चाहता है, MCS बताना चाहता है, आप यूजर हैं, आपके जहाज में GPS है, तो आपको बताना चाहता है कि भाई इतने देर तक डाउन रहेगा, वैसे होता तो नहीं, तो they can send an alphanumeric message through the navigation message, उसके फोर्थ सबफ्रेम में ये डालेंगे तो आपके पास मैसेज आ सकता है। If not, which is mostly the case, alphanumeric data तो आते हुए देखा नहीं हमने, तो अगर ये नहीं आता है, then it can be used or it is used for almanac or contains almanac, ये क्या होगा, पेन सूख रहा है, almanac data of standby satellites. जो स्टैंड बाय सैटेलाइट्स थे, रिमेंबर स्पेस सेगमेंट में हमने पढ़ा था कि देयर आर 24 एक्टिव सैटेलाइट्स एंड 8 स्टैंड बाय सैटेलाइट्स। सो ये 8 स्टैंड बाय सैटेलाइट्स का एल्मनेक डेटा प्रोवाइड करता है आगे भी। बट व्हाट इज दिस एल्मनेक? हमने कल बात किया था, शायद आपने नॉटिकल एल्मनेक जानते हैं आप लोग, क्या होता है उसमें? स्टार्स, सन, मून, प्लैनेट्स, इन सब का जनरल इंफॉर्मेशन होता है, कौन कब कहाँ पे है, आज कहाँ पे है, कल कहाँ था, कल कहाँ को होगा, 1 साल बाद कहाँ होगा, यही होता है। सॉरी एल्मनेक में होता है ना, नॉटिकल एल्मनेक में। Yes, sir. तो दिस इज टेलिंग एल्मनेक ऑफ स्टैंड बाय सैटेलाइट्स, मतलब ये 8 सैटेलाइट अभी कहाँ कहाँ है उसका इंफॉर्मेशन होता है इसमें, एल्मनेक में। Additionally, it is also containing health information of all satellites. Health information of all satellites. That means जो एक्टिव है वो भी और जो स्टैंड बाय है उनका भी।
Then there is fifth subframe, which is containing almanac of active satellites. So these are the information contained in navigation message. First, the introduction, navigation message, a binary data, digital data, transmitted at the rate of 50 bps in the form of a frame of 30 seconds. One frame is divided in 5 parts called subframes of 6 seconds each. All the subframes start with what? TLM word, followed by how, handover word. Very good. इतना लिख दिया, उसके बाद हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबफ्रेम का डिस्क्रिप्शन लिख देंगे. फर्स्ट सबफ्रेम contains atomic clock corrections. Second and third ephemeris data of each individual satellite. That means हर सैटेलाइट का ये इंफॉर्मेशन अलग होगा. सब अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कहां मूव कर रहा हूं. तो इस एफएमएरिस से जीपीएस रिसीवर सब सैटेलाइट का अलग अलग लोकेशन पता करेगा. फोर्थ वन इज अल्फान्यूमेरिक डेटा, और अगर अल्फान्यूमेरिक डेटा नहीं है तो almanac of standby satellites and health information of all other satellites. Fifth subframe is containing almanac of all active satellites. That means satellite number 1 to 24. Almanac again, what? All the satellites, where they are. Is it okay? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So बेसिकली क्या है कि अगर अर्थ है तो एल्मेनेक डेटा की बात करें तो सैटेलाइट्स यहाँ पे इधर उधर को हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं. There are 24 satellites which are revolving in the orbit. एल्मेनेक बताता है कि कौन कहाँ पे है, सबका लोकेशन बताता है. जीपीएस रिसीवर अगर यहाँ पे है, मान लीजिए रिसीवर इज हियर, तो इस एल्मेनेक से पता लग जाता है कि मेरे व्यू में ये है, ये है, ये मे बी ये. तो जीपीएस रिसीवर को एल्मेनेक से पता लगता है कि कौन कौन से सैटेलाइट मेरे को विजिबल, क्योंकि मालूम है कि ये सब तो नहीं दिखेंगे, पीछे है अर्थ के दूसरे तरफ. फिर इनमें से ये सही वाले जो राइट काइंड ऑफ सैटेलाइट्स हैं, which is good for position fixing, those are selected. These will not be selected क्योंकि ये बहुत horizon की तरफ जा रहा है. So from the almanac it will find out which are the good satellites और उससे वो पोजीशन फिक्सिंग करेगा. पोजीशन फिक्सिंग करने के लिए जो सैटेलाइट घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, इसका एफएमएरिस से पता करेगा कि वो अब कहाँ है, अब कहाँ है, अब कहाँ है, अब कहाँ है. इसका अलग सैटेलाइट ये अलग को जा रहा है तो इसका पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, सबके एफएमएरिस डेटा से इंडिविजुअल का पता करेगा. So did we understand? Yes. Yes, sir. रेंज कैसे कैलकुलेट होता है? How the range is calculated?
Remember that there is a receiver on the surface of the earth, maybe somewhere. Here is a satellite which is transmitting signals L1 and L2. Let us say this is civilian receiver, हम और आपका receiver है, तो L1 पे काम करेगा. L1 में CA कोड आ रहा है या नहीं? L1 में CA कोड है या नहीं? हाँ ना बोलो, जवाब दो. Yes sir, है sir. There is P code also. Yes sir. बट ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि मैं जीपीएस रिसीवर जो मेरा है वो सिविलियन टाइप है. एंड देयर इज nav मैसेज. करेक्ट और नॉट? हाँ सर. Correct sir. तो जैसे ही मैं ऑन करता हूं अपने रिसीवर को, ये इस सैटेलाइट का nav मैसेज जो है वो डाउनलोड करता है. मेरा रिसीवर सैटेलाइट से जो नेविगेशन मैसेज आ रही है उसको डाउनलोड करता है. डाउनलोड करते ही मेरा पेन कहाँ गया? और रुको 1 सेकंड, 1 सेकंड प्लीज. सॉरी. जब नेविगेशन मैसेज डाउनलोड हो गई तो रिसीवर को पता चल गया कि देयर आर सैटेलाइट्स हियर एंड हियर एंड हियर एंड हियर. रिसीवर को पता चल गया कि कौन कौन से सैटेलाइट कहाँ कहाँ है. इसमें से अच्छे वाले सैटेलाइट्स को चूज कर लेता है वो, कि मैं इनसे पोजीशन फिक्स करूंगा. अब फिर क्या करता है नेक्स्ट स्टेप में, कि इन सब का एफएमआरएस डाउनलोड करता है 1 by 1. इससे सर की पोजीशन पता चल गई कि कौन कहाँ है. अभी हर सेकंड में पता चलता है, तो पोजीशन पता चल गई और रेंज अब निकालना बाकी है. रेंज निकलेगा किससे? CA कोड से. So how is the range calculated? Now that we have understood कि रिसीवर को ऑन किया तो वो एक सैटेलाइट को लॉक करता है, उससे एल्मनेक निकालता है, नेविगेशन मैसेज से एल्मनेक से सबका प्रॉपर जो करेक्ट टाइप ऑफ राइट टाइप ऑफ सैटेलाइट है उसका लोकेशन, फिर सबके नेविगेशन मैसेज, सबका एफएमआरएस डेटा, सबके लोकेशन पता चल. Now how is the range calculated? This is transmitting the CA code, which is basically a digital signal. We have already understood CA code is transmitted at the rate of 1.023 Mbps, etc. in the form of 0 and 1. तो डिजिटल कोड है. रिसीवर सिंक्रोनाइज करता है इसके साथ, सैटेलाइट के साथ, और यहां से हर मिली सेकेंड में CA code is being repeated. रिसीवर सिंक्रोनाइज करने के बाद सैटेलाइट से वो भी जनरेट करने लगता है कोड. So the code when it is commencing from here, this code, मान लीजिए CA code बोलते हैं इसको, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते. इस CA code 1 को जब ये ट्रांसमिट हो रहा है तो CA code 1 is also generated by the receiver. रिसीवर ट्रांसमिट नहीं करता, ट्रांसमिट कौन कर रहा है? तो सैटेलाइट. So now that both are generating the code at the same time, इससे होगा क्या? Receiver is able to find out exact time. T1 पे ये जनरेट हुई तो T1 पे ये चला भी था, यहां से दोनों साथ साथ में कर रहे हैं. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. So the receiver now knows, जैसे ही इसने जनरेट किया तो इसको पता चल गया कि ये चली यहां से. अब वही कोड थोड़ी देर के बाद वापस मिलता है इसको.
तो इतनी देर में टाइम थोड़ा आगे खिसक गया, टाइम T2 पे ये वाली कोड जो ट्रांसमिट होके आई थी वो मिली। ये जनरेट किया था टाइम T1 पे और ये थोड़ी देर बाद पहुंचा टाइम T2 पे, तो इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस मिल जाएगा या नहीं? मिल जाएगा या नहीं? Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है? So now we have the time during which it was traveling from satellite to the receiver, and it was traveling at the speed of light, which is c 3 into 10 to the power 8 meter per second. So at this speed you were traveling, the code was traveling for these many seconds. What is the distance traveled by the wave? Yes, ये कोड the radio wave L1 जो कोड था वो यहां से यहां 30 सेकंड्स के लिए चला at this speed. What is the distance traveled? Three into 10 to the power 8 divided by T2 minus T1. Divided by? Sorry, multiplied by. Multiplied. So the distance or range is equal to C into T, which is T2 minus T1. This is how the range is calculated. क्या? तो दोनों को सिंक्रोनाइज होता है. The code transmitted by the satellite reaches after some time, so T2 minus T1 का gap निकल आता है, which is this multiplied by the speed of light is the range here. That is how it is finding out how far is the satellite from the receiver. और इसके एफएमआरएस डेटा नेविगेशन मैसेज है, इसका लोकेशन पता चल ही गया इसको. So are we now okay how the range is calculated? सर अगर Yes. जैसे आपने बताया था the wave passes through the atmosphere तो एरर आएगा, टाइम डिले हाँ. होगा. हाँ. तो वो करेक्शन इसी में करेंगे जो टाइम होगा T2. वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब ये टाइम जो है वो 100% करेक्ट नहीं होगा, देयर विल बी एन एरर. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? यस सर. तो दैट मींस देयर इज एन एरर इन द टाइम. एक तो ये एरर होगा जो एटमॉस्फेरिक डिले वगैरह के चलते हैं. दूसरा सैटेलाइट क्लॉक जो है वो और जो रिसीवर क्लॉक है उसमें भी मैचिंग में गड़बड़ हो जा सकती है या नहीं? होती है. बल्कि दो लोगों का घड़ी यस सर. यहाँ हम अपडेट तो करते हैं, यहाँ से सिग्नल आ रहा है फर्स्ट सब फ्रेम ऑफ द नेविगेशन मैसेज, क्लॉक करेक्शन सिग्नल. हम अपडेट तो करते हैं लेकिन कुछ लिमिटेशन से इन दोनों के बीच में एक डेल्टा टी का डिफरेंस रह जाता है. तो दैट आल्सो कॉजेज एरर. सो ये जब अगर टाइम में एरर है तो ये रेंज में एरर हो जाएगी या नहीं? यस. In fact, you only suggested कि हाँ उसका क्या करेंगे. तो इट इज करेक्ट कि ये रेंज में एरर होता है. एंड इट इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर इज दिस range which is having error due to time difference between the two clocks, and so this one has been given a special name called pseudo range. So pseudo range is equal to C into T plus delta T. T was the actual difference, delta T is the difference between the two clocks. तो एरर हो गई तो करेक्शन कैसे होगा? जब रेंज मुझको गलत मिल रही है तो पोजीशन गलत निकलेगी. तो ये करेक्शन जो है इट इज करेक्टेड एट द रिसीवर इन अ मैथमेटिकल मैनर. मैथमेटिकल तरीके से
इस एरर को हम लोग मिनिमाइज करते हैं या निकालते हैं. इट इज करेक्टेड एट द रिसीवर मैथमेटिकली. जो रिसीवर को मिल रहा है इसका टाइम उसका टाइम डिफरेंस, जो रेंज कैलकुलेट हुआ c into t plus delta t, that is having error pseudo range, but this pseudo range can be converted into true range mathematically by a formula. वो हम अगले क्लास में देखेंगे. Do we understand how the Okay. range is calculated? How the range is calculated? Yes, sir. Simple. Yes, sir. The time of flight of the signal is calculated. कैसे? तो synchronize करते हैं पहले, so that satellite and receiver both are generating the code at the same time. Time t1, t2, t1, t2. ये रिसीवर है यहाँ पे नीचे, ये सैटेलाइट है. t1, t2. जितने देर में पहुंचा उतने देर में टाइम आगे निकल गया. तो t1 minus t2, sorry, t2 minus t1 is the difference during which it was traveling. Multiplied that with the c gives the range. But very rightly pointed out, this range has error because of what? Difference between the two clocks. What is called clock bias error. जो दोनों के बीच में एरर रहती है वो क्यों रहती है? क्योंकि 100% सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, करेक्शन नहीं हो पाती. लाख कोशिश कर लें लेकिन कुछ लिमिटेशन है जिसके चलते ये नहीं हो पाती. वो डेल्टा टी का एरर रह जाता. तो जो रेंज मिलती है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उस रेंज को जिसमें एरर है Pseudo range. pseudo range. And this is corrected how? Mathematically. Where? In the receiver. Pseudo range से हम ट्रू रेंज निकाल लेंगे, अगले क्लास में निकालेंगे. ठीक है? Yes, sir. What do you say? All good? Yes, sir. All good. बेचारा रोते रोते बोल रहा है ऑल गुड. दिव्यांश नहीं क्या सर, हुआ? ऑल गुड. ऑल गुड All सर. good. ठीक ठाक है ना? थोड़ा सा भारी लगता है, चलो पहली बार पढ़ेंगे तो, और ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है भी. हम अभी सेकंड मैथ्स में हैं और जीपीएस पढ़ा रहे हैं मुझको, बट नॉनदलेस चलो गोलमोल में इतना ये सब हमने बताया, तो इससे आप जो नोट्स पढ़ेंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी आपको. यू डू हैव द नोट्स कॉन्क्रीट फॉर्म में, आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसको पढ़िए, उससे मैच कीजिए अपने अंडरस्टैंडिंग को, इट विल बी बेटर. ठीक है, चलो देन बाय बाय. एनी क्वेश्चंस? Thank you, sir. Yes. Bye, sir. Thank you, Yes. sir. Thank you, Thank sir. you. Have a good day. Keshav, any questions? Keshav? No, sir. Thank you. चलो ओके, बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye bye. Go have lunch.